very good morning to all our viewers. You're watching The Burning Question on India Today with me, Anjali Pandey. And at the top of this hour, we're getting some breaking news. Prime Minister Modi condoles the deaths in Kurnool bus tragedy in Andhra Pradesh. Ex-gratia of rupees 2 lakh has been announced for the kin of the deceased. Compensation of 50,000 rupees for the people who have been injured in this tragedy. Andhra Pradesh Minister says some charred bodies are still in the bus. DNA samples of the deceased is being collected, and over 12 dead in Andhra Pradesh bus fire tragedy. So 12 people have unfortunately lost their lives in the Kurnool bus tragedy. Prime Minister Modi has condoled the deaths. In fact, an ex-gratia of 2 lakh rupees has also been announced for the kin of the deceased, and compensation of 50,000 rupees has been announced for the people who have been injured in this. Now, Andhra Pradesh Minister claims that some charred bodies are still inside the bus, and the DNA samples of the deceased are being collected in order to identify the bodies. But over 12 people have lost their lives in this bus fire tragedy. And earlier today, my colleague Abdul Bashir spoke with the Kurnool SP on this tragedy. Listen in. ये इंसिडेंट, इस दुर्घटना में कितने लोग की जान गई है और क्या परिस्थिति है अभी वी आर असर्टेनिंग, अभी नंबर्स में आपको बता नहीं सकता हूँ. आउट ऑफ 40 पैसेंजर्स वी हैव आइडेंटिफाइड 18 लाइव. 18 लोग अलाइव, 18 लोग जिंदा है. थोड़े बॉडीज तो दिख रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू टेल द फाइनल नंबर. वन बाय वन वी विल रिमूव देम नाउ एंड देन वी कैन टेल द फाइनल नंबर. एस्टिमेटेड नंबर कितना होगा अभी तक किसी को आइडेंटिफाई? 10 प्लस आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए, तो द बॉडीज आर कंप्लीटली चार्ड. ओके, डीएनए के हिसाब से ही वी कैन आइडेंटिफाई. ओके, और कॉज ऑफ द इंसिडेंट किस चीज की? वो बाइक के साथ एक टकराया, तो बाइक ड्रैग डाउन अलोंग विद द बस, इसी वजह से हुआ है. लगभग कितने बजे हुआ है घटनाएं? सुबह 3 बजे. अभी परिस्थिति अभी ऑनगोइंग, अभी जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है. बता, केस रजिस्टर हुआ है और आगे की कार्रवाई होगी. कोई लैप्सेस पाए गए हैं इस बस में फायर सेफ्टी? So, a Hyderabad-Bengaluru bus caught fire in Kurnool of Andhra Pradesh after a collision with a bike. These are the visuals of the horrific tragedy. Over 12 people have unfortunately lost their lives. My colleague Abdul Bashir gets us more on this. 12 लोग अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनका इलाज अभी चल रहा है. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और लगभग 10 से अधिक लोग मारे जाने की खबर आई है. 10 से ज्यादा लोग बस के अंदर जब आग लगी थी तब उनकी मृत्यु हुई. उनकी शनाख्त की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि लगभग टोल जो है 10 से ज्यादा या 11 से अधिक भी हो सकता है. अभी यहाँ पर जो 40 लोग इस दुर्घटना के वक्त मौजूद थे, उनमें से 18 लोग बाहर गिरे हैं. बस से बाहर एग्जिट से तुरंत वहां से बाहर निकले हैं. 6 जो है एक्टिव थे और 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. अभी इस इंसिडेंट को लेकर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जहां पर डीएनए की टेस्टिंग की जा रही है और लोगों को की शिनाख्त की जा रही है जो अभी तक वहां से लापता है. एसपी का ये कहना है कि दुर्घटना की वजह तो आगे एक बाइक टकराने से और घसीटते वक्त जो चिंगारी निकली उससे बस में आग लगी है. बस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर या फायर सेफ्टी के जो यंत्र है वो मौजूद थे या नहीं, वो जांच अभी चल रही है. लेकिन केस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई यहाँ पर अधिकारी कर रहे हैं. एफएसएल टीम वहां पर पहुंची है जो अभी लगातार इन सैंपल्स, डीएनए सैंपल्स लेकर आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है. So, FSL team is at the spot and DNA samples are being collected from the bus. We're also learning that some charred bodies are still inside the bus. The DNA samples of the deceased are being collected by the FSL team. And these are the visuals from the site of the tragedy. On the right, you can see the moment when the bus caught fire, the Hyderabad-Bengaluru bus. And this is the aftermath of the tragedy on your left. And over 12 people have unfortunately lost their lives. Prime Minister Modi has condoled the deaths in this Kurnool bus tragedy, and an ex-gratia of 2 lakh rupees for the kin of the deceased has also been announced, whereas compensation of 50,000 rupees for the people who have been injured.
So some charred bodies are still inside the bus after the bus caught fire. This is the Hyderabad-Bengaluru bus that caught fire after collision with a bike. And charred bodies are still inside the bus. DNA samples of the deceased are being collected by the FSL team, which is at the spot. And till now, over 12 people have unfortunately lost their lives in this tragedy.